as an entrepreneur, as a video editor. He has done lot of professional work, and Okay, so I'm Vivek, and I'm running my company since past 10 years, and we have clients from all over the world. Maybe they are from China, they are from US, Canada, Slovakia, South Africa, and Japan, maybe a few more countries as well. And so I am here to explain you or say, explain you the benefits of or the significance of animations and how it plays an important role in your life, in everybody's life, in businesses, in your mobile phones, whatever you do, animations and icons and diagrams, they are everywhere. So I'm here to explain you why it is important to understand these things. And if you are into industry, if you are planning to learn these things, what scope can you have in the future? So I think we should start. yes, Okay. So I think my screen is visible. Can I increase the volume of my? sure, sure. No. Okay. So the topic is reify your dreams with animations, the significance. Now, I could have written imagination, reify your imaginations as well. However, dreams is something you think about yourself. That's why I chose this word dream. Now, what are your dreams? How do you define your dreams? Your dreams are something that you see. And although you can explain your dreams, you cannot make other people see what you are seeing, what you are visualizing. But with animations, it is possible. For instance, if I say um, any example, say there is a beautiful bird. Now, for me, beautiful means a color of blue. The bird is of blue color with some purple mix, right? And it's facing towards the left. But for you, maybe if your choice of color is different, maybe for you that the definition of beautiful bird could be maybe yellow. So when you talk about your dreams, it's only you better understand what you are thinking of, what you are doing, and what you're planning to do, or what you're planning to, portray. So with animations, with these kind of diagrams or maybe movements and motion graphics, you can make people see what you are saying in your imagination. So this is the significance of animation, right? From just to start with, and how it is important in your life. Let's see in the next slide. Now, why should you know about animations? It gives you emphasis. Emphasis means you can emphasize on what you are planning to do, or what you are thinking, what you are imagining, what you are dreaming. You can emphasize on each and every detail that you are visualizing in your mind. Then the next point is clarity. You can be very and extremely clear what you want to convey, what ideas do you have, and what you want people to understand about your thought process. And again, then understanding. When everything is clear, when you are emphasizing on something, when you are clear about your ideas, and you are trying to portray or explain people, make them see what you are seeing, there comes a better understanding. You all, everybody, anyone who is like listening to you or talking to you, they can very well understand you. Everybody comes on the same page in this case, right? So I can move on the next slide now. Now, here are some uses in education. Very important point. Simulated labs.
I don't know how many of you understand what is the meaning of simulation, but simulation is when you are mimicking some real thing into some virtual stuff. For instance, I think many of you have seen, or maybe you know, that the trainings, those professional trainings of pilots and maybe some locomotive trainings, they are not on real objects. They don't directly give you the airplane to fly off. They give you some tool, some object, some maybe a cockpit, a virtual cockpit. That is simulation. That is called simulation. And when you are in your school life, maybe when you are studying chemistry or you are studying physics, you cannot be very sure what chemical reactions there would be or anything. But with simulated labs, you can mimic things. Like if you are mixing two compounds, so with simulated labs, you can see the reaction without damaging anything, without going for any financial losses or anything that is really real or materialistic. Everything is on system, everything is on papers, everything is there on the computer screen. And जो भी हो रहा है, जैसा भी कुछ कर रहे हो आप, आपको वहां पर सामने सामने दिखाई पड़ेगा बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए. Then again, interactive classes. Interactive classes is again a very fine department in this case. For instance, this example I give to everybody. Like when you study your physics, basic physics, when your teachers explain how an electron moves through a cable, maybe on a copper wire. इससे पहले अभी तक हम कैसे पढ़ते थे ये सब चीजें? हम पढ़ते थे हमारे व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर, हम एक लाइन ड्रॉ करते थे और उसके ऊपर हम एक छोटा सा आइकन गोला सा बना करके हम एरो बना देते थे, ये बताने के लिए इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. बट विद इंटरैक्टिव, विद एनिमेशंस, we can simply, create two objects on a tool, and we can animate that electron particle to make you understand things in a better manner, in a better way. So that is more, आपको जल्दी समझ में आएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आएंगी, एंड यू विल कीप देम मेमोराइज्ड. आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी वो चीजें. लाइक पुराने एडवर्टीजमेंट्स बैठ जाते थे हम लोगों के दिमाग में, जिनको हम लोग गाते रहते थे बचपन में, राइट? So this is one of the important uses of animations in education sector. It is very important. Everywhere it is there. The next point, in movies, बिना इनके movies बेकार लगेंगी. You cannot imagine some art movies getting that much of money or earning that much of money in the industry. Art movies में हम सिर्फ कैमरा लेके शूट करते हैं और लोग चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, and simple. बुरी वो भी नहीं होती. But when we talk about movies like Interstellar, when we talk about movies like Avengers, right? जिसमें कितने graphics होते हैं, कितने लोग कितना destruction दिखाते हैं. Those destructions are not original. Those destructions are not real. They are just VFX or visual effects that are induced into the movies, right? So movies में इनका बहुत बड़ा use है, उनके अंदर thrills add करने के लिए, उनके अंदर effects देने के लिए, just to keep you entertained throughout the session, throughout the movie. आप हॉल में बैठे रहो एक जगह पर, आप हिलो मत अपनी जगह से, right? Then for realistic illustrations, this is the second option. Realistic illustration, किसी ने ग्रेविटी मूवी देखी होगी, आई थिंक सबने देखी होगी ग्रेविटी मूवी. ये उसी समय की बात है जब हमारे इंडिया में चंद्रयान शायद लॉन्च होने वाला था. तो ये बहुत ज्यादा बात उड़ी थी कि जितने की ग्रेविटी मूवी बनी है उससे कम में हमारा जो रॉकेट है वो चांद पे पहुंच गया. बट ग्रेविटी मूवी, हम रॉकेट की बात बाद में करेंगे, बट ग्रेविटी मूवी में जो रियलिस्टिक डाला गया था, जो रियलिस्टिक इफेक्ट्स डाले गए थे, those were through VFX, graphic designing नहीं, VFX, and then again special effects. There are n number of tools for these, like After Effects है इसके लिए, हम After Effects use कर सकते हैं. Then Houdini is again there. बहुत सारे tools हैं, बहुत सारे options हैं, आप कोई भी सीख लो.
get yourself mastered in that, and you have n number of opportunities in the industry to explore your creativity throughout the globe, not only in India, not only in Lucknow, not only in Bollywood, throughout the globe, in any industry you want to go for, right? So I think we should move to the next point. Gaming. Many kids go for these things, many kids. Even when I was a kid, अभी भी खेलता हूँ, ऐसा नहीं है कि अब नहीं खेलता, अभी भी खेलता हूँ, टाइम नहीं मिलता बहुत ज्यादा, बट जब मिलता है खेलता हूँ. गेमिंग के अंदर आपके डायनामिक एनवायरनमेंट, आई थिंक मेनी मोस्ट ऑफ यू हैव प्लेड Assassin's Creed और मे बी प्रिंस ऑफ पर्शिया. कितने अच्छे ग्राफिक्स हैं उसके अंदर, कितनी सारी चीजें, कितना एनिमेशंस उसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कट सीन्स होते हैं उसके अंदर, जो डायनामिक एनवायरनमेंट्स बनाए जाते हैं, दोज आर अगेन थ्रू एनिमेटेड इफेक्ट्स, थ्रू एनिमेशंस, राइट. देन गेमिंग के अंदर एक अलग सब सेक्शन है, दैट इज कैरेक्टर्स एंड कंट्रोल. कैरेक्टर्स में जब कट सीन्स हम बनाते हैं तो वी सी हाउ कैरेक्टर्स मूव automatically on the screen like it is an animated movie going on. But when we add controls to some gaming engines, we can actually control their activities. Gaming engines हैं, उनके थ्रू हम activities को control करते हैं अपने characters को, and the characters move according to our wish, according to our willingness. Right? Then again, ये बिना animations के नहीं हो सकता. And gaming industry is again growing industry. It will never go off. ये हमेशा चलेगी. अगर आपको कोई भी एक गेमिंग इंजन अच्छे से आता है एंड यू आर गुड एट एनिमेशंस, यू हैव अ वेरी गुड स्कोप इन द इंडस्ट्री ऑफ गेम डेवलपमेंट. एंड बहुत कमाई होती है. पैसे की बात हम नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट करियर की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ वेरी 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 गुड करियर यू हैव देयर, राइट. बहुत जल्दी नहीं कर. देन एनिमेटेड फिल्म्स, हम मूवीज की बात पहले कर चुके हैं, बट एनिमेटेड फिल्म्स आर अगेन फॉर किड्स. बड़े भी देखते हैं, हम भी देखते हैं. एंड with animated movies you can demonstrate the impossibilities. जो चीजें हम रियल लाइफ में नहीं दिखा सकते, हम एनिमेटेड मूवीज में दिखा सकते हैं. आई मीन एनिमेशन के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, जो चीजें आप विजुअलाइज या आप रियलिस्टिकली नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर सकते. आप किसी का हाथ ऐसे घूमता हुआ नहीं दिखा सकते जहां पे जॉइंट्स ना हो आपके हाथ में. बट विद एनिमेटेड मूवीज, एनिमेटेड फिल्म्स, आप वहां पे उनके अंदर एलियंस क्रिएट कर सकते हो. दे कैन बी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल. जहां चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे आप उनको मूव करा सकते हो, करवा सकते हो. एंड देन एंटरटेनमेंट फॉर किड्स. You cannot imagine in a real life that a dog is talking to a human being in their language, or human being is talking in a dog's language. But in this animated stuff, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि मेडागास्कर देखा होगा आपने. मेडागास्कर मूवीज जो सीरीज पूरी आई थी, what was that? That was again an animated movie जिसके थ्रू हम लोग सब देख रहे थे. वहां पे ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही थी जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, नॉर्मली नहीं होती है. रियलिस्टिकली रियल लाइफ में वो चीजें नहीं चलती हैं, राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग देखते हैं एनिमेशंस के थ्रू, एनिमेटेड मूवीज में, या फिर जैसा भी हम लोग अपना कार्टून कैरेक्टर्स. एक यहाँ पे जो कैरेक्टर बना हुआ है, दिस कैरेक्टर, इफ आई से दिस वन, ये अप मूवी का है, जहां पे वो देखते हैं कि घर उनका आकाश में चला जाता है. कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग हैपनिंग इन द रियल लाइफ. आप किसी का घर उड़ता हुआ, आकाश में उड़ता हुआ किसी बलून्स के थ्रू नहीं देख सकते, आप नहीं इमेजिन कर पाओगे. बट विद एनिमेटेड मूवीज दिस इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, राइट. आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. Informatics. We see news every day, and every day something or other thing happens. किसी चीज का ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसी का ग्राफ नीचे जा रहा है. एंड इन द न्यूज चैनल्स और इन द न्यूज बुलेटिन्स यू सी दैट सम ग्राफ्स आर मूविंग. ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, कोई बाहर नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, fluctuation of that particular product in the market or particular object in the market. That is again through animations. इसी में चीजें आती हैं आपके मोशन ग्राफिक्स की. ये सब सेक्शन है इसका.
when your graphs are in movements, those are motion graphics. ठीक है, यहाँ पर अगर हम ग्राफ्स को मूव कराते हैं तो वो ग्राफ्स हमारे रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। देन मोशन ग्राफिक्स के थ्रू हम कई सारी चीजें दिखा सकते हैं लोगों को, जैसे कि हमारे एडवर्टीजमेंट्स आ गए, या फिर अगर हमें कोई चीज कुछ होते हुए दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक मेडिसिन अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ जाकर के कैसे कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, और कैसे कैसे सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर रही है या खराब कर रही है या इनको इम्प्रूव कर रही है। जैसे कि बहुत पहले बचपन में हम ऐड देते थे विक्स का, जिसमें कि वो एक छोटा सा वायरस टाइप का होता था जो गले में इधर उधर लड़ता था। दैट वाज अगेन थ्रू मोशन ग्राफिक्स। हम एक एनिमेटेड कैरेक्टर का गला दिखाते थे और उसके अंदर थ्रोट दिखाते थे, थ्रोट का इंटरनल ऑर्गन दिखाते थे, और उसके अंदर एक छोटा सा कांटे वाला कैरेक्टर उठा के इधर उधर करते थे, एंड दैट अगेन दैट हैड अ फेस दैट वाज शोइंग एक्सप्रेशंस कि वो परेशान हो रहा है, हिट कर रहा है। Presentation is not visible. Can you reshare it, sir? इट इज नॉट विजिबल। Yeah. ये कब कब से नहीं आ रहा है? No issues. Just read. अभी आ गया? Yes. आ गया? काफी देर से नहीं आ रहा है क्या प्रेजेंटेशन? Yes. We have. ठीक है, रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। ओके, कैन वी कंटिन्यू? Yeah, yeah. Advertisements, we were just talking about it. Advertisements, animated advertisements. There's some, your screen sharing is paused. Why it is paused now? We did not. रीशेयर करिए। Resume share. I'm going to resume my share. सर स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर कीजिए। Okay, Stop. मीटिंग को स्टॉप कर दूं? नहीं नहीं, आप बस ओनली शेयरिंग सर। आ Only गया share. आ गया आ गया, ठीक है। फुल स्क्रीन पे प्रॉब्लम कर रहा है सपोज। मे बी आप मत करो। हाँ, फुल स्क्रीन पे नहीं कर रहा हूँ, there is somebody who's trying to enter. Right, advertisements, we were just talking about it. Animated advertisements put more impact on your brain. एक सिंपल पोस्टर अगर आप देखोगे तो it won't give you that much of impact, it won't give you that much of, you know, आपको इतना अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। But when that advertisement is animated, you get many things, you get a good response. Like that I was talking about the Wix ad that we used to see earlier. अभी तो बहुत सारी चीजें improve हो गई हैं, बहुत सारा कुछ आप देखोगे तो some things look extremely realistic, but I am just trying to convey कि ये चीजें बहुत पहले से चलती आ रही हैं, and people earlier understood this part कि जो चीज भी movement में है, जो चीज भी दिख रही है, that will give more impact on your mind. जैसे कि अगर मैं सिंपल बैठ करके यहाँ पे बात करता रहूं, कुछ भी ना दिखाई पड़े, तो you won't be able to understand कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, but my body language is trying to explain. मेरी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, दिखाई अगर पड़ रही है वहां पर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं कैसे चीजों को विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, राइट? एंड देन अगेन इसी का सबसेक्शन इज प्रमोशंस। व्हेन यू प्रमोट समथिंग, animated promotions are always better than static promotions क्योंकि आपको response अच्छा मिलता है। When you will be working in an industry where you are a marketing person, where you are in charge of promoting your stuff, आप हमेशा ये notice करोगे कि जब आपके जो stats हैं वो तभी improve दिखाई पड़ेंगे when you are promoting something in a more dynamic form, in an animated form. Static promotions काम करते हैं, ऐसा नहीं है, आपके काम बहुत सारे आते हैं, बट वो पोस्टर लग जाते हैं दीवार पर या कुछ भी हो जाता है, आदमी देखता है निकल जाता है। बट व्हेन समथिंग मूव्स, व्हेन समथिंग इज मूविंग ऑन द स्क्रीन, कहीं पे सामने दिखाई चलता हुआ दिख रहा है आपको कुछ, तो आप ज्यादा उसमें एंगेज हो जाते हो, आप इंटरैक्ट करने लगते हो। मतलब
वर्चुअली इंटरेक्ट करने लगते हो, सबकॉन्शियसली उससे इंटरेक्ट करने लगते हो, तो आपको ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, यू जस्ट गेट इनटू दैट थिंग, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. वो जल्दी हो गया. ओके, सो Yes, sir. बहुत जल्दी मैंने बोल दिया शायद. You can continue. Vivek ji, you can continue. Vivek ji, you can continue. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Please continue, Vivek ji. Okay, ma'am. Okay. So although the presentation is over, I think screen sharing. Okay, the presentation is over, but nevertheless we can talk a lot about animation. We can talk a lot about gaming stuff, and we can talk a lot about your career in this animation part. You can start from learning the basics. You can start from learning the graphic designing. You can start from learning how to draw up a single circle, a small circle like this one. Like this is the circle I'm talking about. आप इसको draw करना सीख सकते हो, and then you can try to go take this circle to something, some tool where you can add animations to it. For instance, if we go right from the start, and if we play this, see what happens. Right, this is animation. पहले ये appear हुआ, फिर हमारा दिख रहा है ना, मेरा माउस तो दिख रहा होगा सर. Yes. पहले हमारा ये टेक्स्ट अपेयर हुआ, इसके साथ साथ हमारा सर्कल अपेयर हुआ, it just bounced in, and then again it gave you some impact, some effect. This one, this is again animation. The way it is appearing on the screen, it looks good, and that's why it gives you more, impact. आपके दिमाग में ज्यादा आएगा ये चीजें. अगर हम सिर्फ एक ये लगा देते बिना किसी एनिमेशन के, अगर हम स्क्रीन यहीं से ओपन करते डायरेक्टली, तो शायद आपको इतना क्लियरली ना समझ में आता और ना आपके दिमाग में ये चीज हमेशा के लिए बैठ जाती. बट नाउ बिकॉज यू हैव सीन दिस मूविंग ऑन द स्क्रीन, you will recall it, you can memorize it. Yes. Mute. Okay. Okay, sir. Like you have told us that animation is a very effective tool to engage audience or the consumer. Can you just give one of the examples where you would have been trying to use animation as a medium within the industry and you actually found it much more effective than what the previously used method by the client? Okay, so I've been using animation since past 7 years, and जो clients की requirement होती है, the clients require that whenever I create some videos for them, like how-to videos, but before the video starts, actually the meat comes in. They need some of their brand promotions, like introduction हो जाए. But अगर simple introduction होगा, आपने YouTube पे देखा होगा, अगर simple introduction होगा, तो it won't give you that impact. But when their logo is appearing on the screen in an animated form, उनका logo form हो रहा है, उनका logo बन रहा है, या अगर आपने जैसे पिक्सार का कुछ देखा होगा, पिक्सार का जैसे जो आता है एनिमेशन जो आता है स्टार्टिंग में, दैट इज अगेन वेरी डायनेमिक. उसी तरीके से हम जब अपने क्लाइंट के लिए एक एनिमेटेड लोगो क्रिएट करते हैं, तो इट गिव्स देयर ब्रांड सम मोर आईज टू लुक एट. ठीक है, दिस इज वेयर आई यूज एनिमेशंस. दिस इज वेयर आई यूज एनिमेशंस फॉर ब्रांड प्रमोशंस. देन इसके अलावा लोअर थर्ड्स, व्हेन द न्यूज चैनल shows something, when any news channel shows something or shows an interview, तो उसके नीचे जो एक एनिमेटेड फॉर्म में उनका नाम लिख के आता है, दैट इज लोअर थर्ड. उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है. हमें देखने में पता नहीं चलता होगा, एज अ लेमैन अगर कोई आदमी उसको देख रहा है, कोई इंसान उसको देख रहा है, उसको लगता होगा हाँ नाम आ गया, बट वो नाम लेके आने में कितना एनिमेशन बैकग्राउंड में यूज हो रहा है,
कितनी चीजें उसमें डाली गई हैं, कैसे एक एक उसका फ्रेम बाय फ्रेम उसको स्ट्रक्चर किया गया है, उसका बैकग्राउंड, उसका फोरग्राउंड, उसका टेक्स्ट कलर, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज सो डायनेमिक। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो स्क्रीन पीछे है, जो जिस बैकग्राउंड पे वो उसका इंटरव्यू चल रहा है, उसके कंट्रास्ट में होना चाहिए, ताकि कहीं नाम हाइड ना हो जाए, कहीं नाम छुप ना जाए। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एनिमेशन। आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सर, एनी अदर क्वेश्चन? Like, sir, if we see in today's time, lot of youngsters are trying to be YouTubers and like content creators. So I just want to ask how animation can help them to drive traffic to their content which they are creating. And if a student has to start, from where they should start, because a lot of students just feel that when they start with the animation there is so much to begin with. Yes. So what should be the ideal start for a student to begin with, and how they should use it if they aspire to be a content creator or a YouTuber in today's time? Okay. When they want to be a YouTuber, if they want to be a YouTuber, it depends what type of content they are trying to show. For instance, if they are trying to explain something related to how-to stuff, that what I do actually, how-to stuff, or how to perform a particular task on a computer screen, so they need to start learning from Camtasia. Camtasia is something, Camtasia and or OBS. These are the tools that record your computer screens. ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, बट देन अगेन इट इज जस्ट रिकॉर्डिंग पार्ट. टू ऐड डायनेमिक्स टू इट, you need some animations, क्योंकि कुछ tools जो there are that this Camtasia itself has its own video editor, and it has some tools on the left panel, of course on the left panel, जहां से कि आप उसमें डायनेमिक्स इंक्लूड कर सकते हो. मे बी यू कैन एनिमेट अ सर्कल कमिंग इन, or maybe you can animate a lower third coming in, anything that you want to convey, maybe screen zooming in, zooming out, right? So this is where, if you want to become a YouTuber, then if you want to go with the starting point में, it again depends कि आप करना क्या चाहते हो. If you want to be an full-time animator, the very first thing that you should go for should be Illustrator. I think Illustrator is the best tool for learning. आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, जहां से कि आपका ये सर्कल जो आप देख रहे हो कॉर्नर पे, ये इलस्ट्रेटर पे बना हुआ है विद सम ग्रेडियंट इफेक्ट्स एडेड टू इट, जिसकी वजह से इट इज लुकिंग मोर डायनेमिक, राइट? देन आफ्टर लर्निंग इलस्ट्रेटर यू कैन गो टू आफ्टर इफेक्ट्स, जहां पे आप मोशन ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हो, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो. एंड ये सब करने के बाद ये आपके टूल्स बना देगा जो आपके वीडियो को डायनेमिक बनाएगा. ये टूल्स अभी आपके वीडियो पे सीधे इंटीग्रेट नहीं हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट्स आपके सीधे वीडियो पे इंटीग्रेट नहीं हो जाएंगे, ये अलग बनेंगे इलस्ट्रेटर एंड आफ्टर इफेक्ट्स पे. देन यू विल इंपोर्ट देम टू योर वीडियोस. फॉर इंस्टेंस, a smiley face that pops up from the screen. अगर किसी यूट्यूबर ने कोई फनी बात बोली है, तो एक डायनेमिकली कुछ पॉपअप होके आ जाएगा आइकन, जो कि बहुत फनी सा लगेगा देखने में. दैट हैज बीन डिजाइंड इन इलस्ट्रेटर एंड एनिमेटेड इन आफ्टर इफेक्ट्स. या फिर कोई और टूल, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो. दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड in Camtasia. Within Camtasia, you don't have to go for any other tool. But then again, Camtasia is a paid application. You need to purchase it. So these are the things that you should start from if you want to become a YouTuber. And again, your content. अगर YouTuber बनना है, तो एक चीज जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, आपका जो भी कंटेंट है, try to be the best in your field. Otherwise, there's no use. There are millions of people there. But if you are best at what you do, you will definitely be successful in the market, in the industry, and obviously throughout the globe. Is there anything else, sir? Students, we are open for any queries. If you have anything you want to ask, or something which just excites you, you want to know, you can ask, sir.
In the meantime, Vivek Any ji, please queries share anyone your having? journey with us. Yes, My please. journey. Yes. My journey. Okay. Started my career as a writer, as a blog writer. I used to get a very small amount. You'll laugh at me. I used to get 20 rupees per 500 words initially. But then my clients my clients uh, pointed out my mistakes. I learned from them. I improved. And while improving, when I was in the process of improving and learning more words, improving my vocabulary or increasing my dictionary, I just thought, how I'm learning these things. I was learning through YouTube, and then my mind, something stuck in my mind कि यार ये वो सिखा रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तो कैसे किया होगा ना, कहीं से ना कहीं से तो रिकॉर्डिंग उन्होंने करी होगी. So what I searched on Google, I searched what is the best recording tool. This was the term I typed, I searched for. Then while going through several blogs and articles, I just learned a new term that was called screencasting. Screencasting was there. Now, screencasting is a technical term for screen recording. I didn't know that earlier. Then when I searched for screencasting, I came to know better about it. And then I searched for the best tool for screencasting. And then I came to know about Camtasia. Then I searched on YouTube how to use Camtasia. I went through their entire course, started preparing myself. I started using Camtasia, created first demo video and sent it to my client. My client said, Vivek, it's good, but you are talking too fast. उन्होंने मुझे बोला थोड़ा धीरे बोला करो, थोड़ा स्पीड कम करो बोलने की. I created another video. उनको समझ में आया, but then there were some mistakes. They told me कि थोड़ा सा और improvement करो, थोड़ा सा background music include करो, थोड़े से dynamics include करो. Now dynamics came. मैंने कहा what kind of dynamics? They gave me an example. They sent me a video, sample video. It had some animated objects. I was very confused. क्या करूं मैं इसका? Then I searched Google कि how to add dynamics. They said objects should be moved, objects should be animated. Then I searched how to create an object. I came to know about Illustrator. Then Illustrator पे object बनाना सीखा. Then I learned how, I searched on Google how to animate this object. I came to know about After Effects. It was a long journey. I had to go through several blogs, and ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने यूज करना सीख लिया और करते करते वो यूज हो भी गया, ऐसा नहीं हुआ. I was stuck several times. बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं काम करते करते अटक गया, कुछ करना चाह रहा था, नहीं हो पा रहा था. Some error was coming up. I again searched that error code on Google. वहां पे सर्च करने के बाद बहुत सारे ब्लॉग्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर फोरम्स आते हैं. I went through each and every question answer forum. I read every suggestion that they gave. उनको फॉलो किया. नहीं हो पाया, अगला सजेशन ट्राई किया, थर्ड किया, फोर्थ किया. Then ultimately I found a solution. And this didn't happen just once. It happened many times. So it was not an easy journey. But then again, अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आपको इस तरह की चीजें बता रहा हूं, it is because of that tough part I have played. And आपको भी इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा. No matter आप कहीं से भी पढ़ाई कर लो, आप कुछ भी पढ़ाई कर लो, कोई भी आपका ट्रेनर हो, आपको अपनी जर्नी खुद करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी. स्ट्रगल्स आपके होंगे, because every tool that you will use, every time that you will try to create something in that tool, you will get a unique error. यूनिक एरर आपकी विसिनिटी में जितने लोग होंगे उनके लिए होगा, लेकिन अगर आप उस एरर को सर्च करोगे ऑनलाइन तो बहुत सारे लोगों को वो एरर आया होगा या उससे मिलता जुलता एरर आया होगा. एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट एवरी सॉल्यूशन दैट दे सजेस्ट, फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा. जो मैं अब करता हूं, आई हैव अ फेसबुक पेज. मैं जैसे ही मुझे कोई सॉल्यूशन मिलता है, मैं सबसे पहले शेयर कर देता हूं फेसबुक पे जाकर के अपने पेज पे, ताकि मेरे जो पेज के फॉलोवर्स हैं उनको दिक्कत ये चीज दोबारा ना हो.
This is the way I explain things. This is the way I share my ideas. I share my learning things. I share my learnings, and this is what I do. And I think कोई और question है? Please come up with the questions. You have actually pointed out a very valuable thing. A lot of us face actually waiting somebody to just walk in and resolve There is a question from Dr. Priya. all Give our inputs issues. about making Okay. of some renowned films where VFX is used. Can you please reiterate your question? I didn't You are unmute. Please unmute yourself. Vivek ji, Ma'am, can you please reiterate your question? I am unable to understand what. give what... inputs about Priya making of ma'am, some renowned films where VFX is used. Can you just Vivek ji, again you are muted. Ma'am, your voice is not actually very clear. I am not able to understand. Aditya, please repeat the question. It is in the chat box. I think we have unmuted Priya ma'am. Priya ma'am, can you speak now? Ma'am, No, she cannot. okay, ma'am, there are many films. For instance, Avengers. Avengers is again a film where VFX is used in very dense and very intense manner. Gravity, Interstellar, anything. And there was a movie way back in 2001. It was released in 2001 or 2002. The Core. These are all about, science fiction and space technology and everything. So these things, we cannot go to space. We cannot go inside the core of the sun or core of the video is not visible. Yes, sir. Yes, it has come. Okay. So हम लोग कोर में नहीं जा सकते, अर्थ के कोर में, अर्थ के क्रस्ट में नहीं जा सकते. फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल. वी कैन नॉट मूव थ्रू द स्पेस फॉर लाइट ईयर्स के स्पीड से हम नहीं मूव कर सकते स्पेस में, बट थ्रू एनिमेशंस वी कैन डू दैट. आपने इंटरस्टेलर में जो वो देखा था, दैट ब्लैक होल, that was again a good example of VFX. जो gravity movie थी जिसमें आप देख रहे हो कि वो बाहर निकल रहे हैं, and the space has its aura, its glow, that the earth has aura, its glow, the space suit. Then again there was a movie of Arnold Schwarzenegger अभी जो आया था, Terminator Genesis. इसमें आमने सामने, right facing each other, there was an older version of Arnold Schwarzenegger and there was a younger version of him. The younger version was a completely animated creature. So this is where the more details you add, the more realistic your character becomes, or the more realistic your object becomes. This is why it takes so much of time to create such kind of sci-fi movie, or it takes a lot of heavy duty computers to render those things out. But once you are through with the technology, once you are through with the steps, once you are through with the process, things become very simple. It's only the machine or the hardware part that takes some time to get things done. I think. Am I visible? Am I audible? Yes. Okay. So, is there any other question? Please come up with your questions if you want to ask. So one thing I would like to know that in today's time, if you see, there are a lot of software which are being used across the industry. Like we use Adobe Premiere, we use After Effects, we use DaVinci has recently caught up with the industry for color grading. So what should be like the starting point for a studio, as you have mentioned, Camtasia Studio.
that is a very good software. So what should be the starting point for Okay. us to See, then sorry to burst the bubble, get but a person into cannot be everything. section flow or what thing to recommend to be आप सब precise. कुछ नहीं बन सकते. You can either be an animator, you can either be, or you can be an editor, or you can be a creator, or maybe a designer. सब कुछ आप नहीं बन सकते. So you need to decide कि आपका interest किसमें है. अगर आप editing में जाना चाहते हो, तो Camtasia has the simplest of this editing stuff. Editing का जो console है, it is the simplest form. But उसमें आप बहुत ज़्यादा complex tasks नहीं कर सकते. For production, for industry standards, you either need Final Cut Pro, or you need Premiere Pro or the Vinci Resolve. Now, Final Cut Pro and Premiere Pro, they are paid applications, but the Vinci Resolve is again free. So Vinci Resolve आप use कर सकते हो. It has a bit of steep learning curve, but again, it's free. आप start कर सकते हो उससे. But starting point should be in a very simple form. Maybe आप start कर सकते हो Camtasia से. Or there is another tool. मेरी client जो मेरे client है Wondershare, उनका एक tool है Unique Converter and Filmora. ये बहुत चलते हैं आजकल market में. These are my clients. I work for them. I write for them. I have created videos for them. तो आप इनके टूल्स यूज कर सकते हो. जैसे कि इनका यूनिक कन्वर्टर एक टूल है जिसमें एडिटिंग का पार्ट है. आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो. फिल्मोरा इज अगेन वेरी इजी टूल, बट इट इज अगेन पेड एप्लीकेशन, बट यू कैन यूज इट फॉर फ्री फॉर 30 days. And there are other workarounds which I don't want to mention how to use them for free forever. I don't want to mention those things, but then there is always a workaround for everything. So starting point, if you want to go into editing field, you can start with Filmora. If you want to go with animation part or VFX part, you can start with After Effects. It is a bit simpler comparatively. Then you can move your journey forward. And if you want to be a designer, you can start with Illustrator and Photoshop. If you want to be a content creator, you can start from Camtasia again. So it's up to you. अब एक ये जो हम लोग जो we are talking on a Zoom meeting, it's a very generic question. So if you need some personalized or some tailored suggestions, you can always mail me up. मैं फिर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सजेस्ट कर पाऊंगा बेटर तरीके से कि आपके लिए क्या सही रहेगा, as per your interest, as per your hobbies, or as per how much technical knowledge you have before coming to me. So anything else if you want to ask, I'm open. Any of the faculties, if they wish to interact with sir, I can just request to be unmuted. Please let There me is know a if any of question, the faculty just want to Vivek have ji. an interaction. Yes, ma'am. I think Mr. Gaurav Rawat has a question. Can you tell why green and blue screen is only used for shoot? See, green screen, it is a curtain. It is a green cloth that is kept behind your screen. Why? Because when you use green, or it is called green. It is called green screen, but you can use any color in contrast of what clothes you are wearing. For instance, I'm wearing this orange color shirt. So if the background color is orange, you cannot pick my character out of that, right? So आजकल जितना भी काम हो रहा है उसमें आप क्या करते हो, अब इसके पीछे अगर ग्रीन स्क्रीन होगा या ब्लू स्क्रीन होगा, तो when you use editing tool, any editing tool, you can pick this color out of that color, the background color. And then जब आप उस color को select करते हो, you know what is the process? I'll just explain the process conceptually. You will select this color, you will invert select that color, and you will delete that color. राइट, तो पीछे की स्क्रीन पूरी हट जाएगी वहां से, और यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट दैट कलर. आपका जो कलर पिकर होगा उससे आप उस कलर का एक पिक्सल चूज करोगे और पूरा का पूरा जो फ्रेम के अंदर जो जितना भी वो कलर का होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा. एंड यू कैन सिंपली प्रेस डिलीट. आप जब डिलीट प्रेस करोगे तो सारा वो कलर हट जाएगा एंड यू विल हैव अ ब्लैंक स्क्रीन, a transparent background.
And on that transparent background, you can put anything you want. You can put a mountain, you can put a river, you can put anything. This is how VFX, and बहुत ऐसा VFX तो नहीं बोलेंगे इसको, ये तो बहुत ही सिंपली लेमन लैंग्वेज में बताया, but this is how things are done in the industry. आपने जो बाहुबली मूवी देखा होगा, उसमें भी ऐसा ही था, ग्रीन स्क्रीन पर ही सब कुछ चलता है, बिकॉज आप किसी बंदे को या किसी आर्टिस्ट को ये नहीं कह सकते कि तुम पहाड़ से छलांग मार दो, इट इज नॉट पॉसिबल, ही वोंट डू दैट फॉर मनी, ऑफ कोर्स, राइट? सो व्हाट दे विल डू इज दे विल jump from a single stair, but with the green screen in the background, and that green screen is removed, and you will see a 3D graphic or 3D image जहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कि वो इतनी ऊपर से नीचे जंप ले रहे हैं. एंड देन अगेन देयर इज अ कैमरा शूटिंग पार्ट, शूटिंग कैसे कर रहे हो आप, कहाँ से जूम करना है, कहाँ से जूम आउट करना है, ये आप शूटिंग के समय भी कर सकते हो. एंड देन इट इज अगेन सिंप्लीफाइड while editing in a very sophisticated application. Editing tool may be Premiere Pro, Final Cut Pro, or DaVinci Resolve. The thing is, point is, you need to be best in what you are doing. मैं सिर्फ इस चीज के लिए सजेस्ट करूंगा आपको, आप कुछ भी पकड़ लो, कोई भी चीज पकड़ लो, कोई भी स्ट्रीम ले लो, but try to be the best in that. Try to give your 100% in that, so that you can be very, very, very precise with whatever you are doing. तो आपका वैल्यू मार्केट में अपने आप आ जाएगा. इवन एक्सेल को यूज करने वालों का भी अच्छा वैल्यू है मार्केट में, as long as they are good in what they are doing. ठीक है, any other question? Elaborate about chroma. Chroma की, it's again वही चीज है, chroma की हम बात करते हैं तो chroma it is a technical term, it is a thing, it is a process जिसमें कि हम पीछे से बात करते हैं, पीछे हटा रहे हैं, ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हैं, ब्लू स्क्रीन यूज कर रहे हैं, कटिंग यूज कर रहे हैं, तो वो क्रोमा की का ही प्रोसेस होता है पूरा. दिस इज कॉल्ड क्रोमा की, there's nothing else, not at least in my knowledge. Anything, any other question? Just something beyond the topic what we are discussing today, since you use a lot of software. What was the last most interesting thing you discovered while working over any software, which you felt that, oh wow, this is something I would have known earlier. This would have made my job a little more quicker, the workflow. So just curious, like as a professional, we are so much used to doing what we are doing every day that sometimes we actually forget to try new things because we are very hesitant to try new things. So would you suggest trying out new things, or and what's been your experience with that, something new you discovered of late? मैं अपना बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं मतलब I think it may go maybe out of the course, but मैं बताता हूं. मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मैंने बताया, डिस्कस भी किया, माय स्पेशलाइजेशन इज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सिक्योरिटी. बट हुआ क्या, व्हेन आई गॉट सैचुरेटेड, या मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बहुत हो गया, कितना कितना मैं कॉन्फ़िगर करूं, कितने सर्वर्स बनाऊं, तो आई स्टार्टेड कि यार कुछ अलग करना चाहिए. सो देयर इज नथिंग टू बी हेजिटेंट अबाउट. Why? Because जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पर ही तो है, वो निकल के आपका गला थोड़ा ना पकड़ लेगा. सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, सॉरी फॉर दिस टोन, बट जो भी है वो निकल के गला नहीं पकड़ने वाला आपका कि तुमने ऐसा क्यों किया. मैक्सिमम में होगा सिस्टम क्रैश कर जाएगा. तो देयर इज नथिंग टू बी हेजिटेंट अबाउट. देन ये लगता है, कई बार हो सकता है ये लगे कि यार नए सिरे से सीखना पड़ेगा, तो व्हाट आर यू सेविंग योर टाइम फॉर? मतलब क्या करना है वो टाइम बचा करके हमने. हम उस टाइम को यूज करेंगे ना, अपने लिए तो यूज कर रहे हैं, अपने को तो इम्प्रूव कर रहे हैं. आज अगर मुझसे कोई कुछ बोलता है कि विवेक ये करना है, मुझे नहीं पता होता कि वो क्या है, मैं कहता हूँ ठीक है, आई ट्राई. मैं जाता हूँ, मैं ब्लॉग सर्च करता हूँ, मैं उसका बेस्ट टूल मार्केट से उठाता हूँ, देखता हूँ कि ये टूल कैसे काम करता है, उसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करता हूँ. ट्रायल वर्जन डाउनलोड करने के बाद इंटरफेस समझने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाता हूँ, हाउ टू यूज दैट टूल. टाइम तो मेरा है ना, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं. कल को अगर इस काम को सीखने के बाद मुझे 20 लाख का प्रोजेक्ट मिलता है, तो who will be the good person? I'll be the good person. मैं एक दूसरी कार खरीद लूंगा जा करके, राइट? वो टाइम मेरा कहाँ, वो वेस्ट थोड़ी ना हो रहा है, वो तो मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है. वेस्ट कब होगा? जब मैं सिर्फ सोचता रहूं लेट के, यार ये करना है, नहीं कर रहा हूं, चलो फिर कर लेंगे, परसों कर लेंगे. दैट इज एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम.
But if you have something in your mind, start working on it right now. This is the right time. इसके अलावा कोई राइट टाइम नहीं हो सकता. हम कहते हैं होली के बाद करेंगे, नया साल है, नया साल शुरू करेंगे, नए साल में लोग जिम जाने का रेजोल्यूशन बनाते हैं. नोबडी गोज. वो फर्स्ट डे ही होता है बस, उसके बाद नहीं होता है. ठीक है. बट व्हाट आर यू सेविंग योर टाइम फॉर? यू आर सेविंग योर टाइम फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर. बट वो कैसे बनेगा? आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे, आप उस टाइम को सीखने में यूटिलाइज करिए. ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ एवरी डे, एवरी डे. आज भी मुझे कोई चैलेंजिंग टास्क मिलता है, आई ग्रैब दैट. मुझे मजा आता है. मैंने सर को कई बार बोला भी है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे चैलेंजेस टास्क दो ना. रोज तो जो मैं कर रहा हूँ उसमें तो मुझे आता ही है, वो तो मैं वैसे ही बैठ के कर लूंगा. उसमें मैंने क्या सीखा? आई एम गेटिंग स्टैग्नेंट. इसी का सर, व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू फेस ड्यूरिंग योर वर्क? व्हाट वन थिंग यू सजेस्ट अस टू टेक केयर ऑफ इन आवर ट्रेनिंग पीरियड? सी, डिफिकल्ट तो सभी होता है, एंड ऐसा कुछ नहीं जो इजी हो. आपका बस डेडिकेशन काउंट करता है. और ट्रेनिंग पीरियड में आई डोंट नो आपका प्रोफेशन, आप स्टूडेंट हो कि कौन हो, आई डोंट नो. बट ट्रेनिंग पीरियड में एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस. जो भी आप सीख रहे हो, जिससे भी आप सीख रहे हो, आप उससे खुल के क्वेश्चन पूछो. जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो पूछो, सिर खा जाओ उसका पूछ पूछ के. ठीक है. मैं ऐसे ही करता हूँ. एंड when I was a student, when I was learning things, most of the times I was thrown out of the class because of asking too many questions. But then again, that gave me an inspiration to learn on my own. ठीक है. तो अगर कोई सिखा रहा है, सीख लीजिए. आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आपका सिर्फ यही लर्निंग प्रोसेस है. आप क्वेश्चंस पूछिए, और सिर्फ क्वेश्चंस पूछ के आंसर्स पे सेटिस्फाइड मत हो जाइए. आप उस पर सर्च करिए, आप उस पर रिसर्च करिए, आप उस आंसर्स को वेरीफाई करिए. क्वेश्चन एवरीथिंग दैट यू सी और हेयर. आपको किसी ने सजेस्ट किया ये करो, अब मैं जो बोल रहा हूँ आज, जो मैंने आपको सजेस्ट किया, आप इसको भी, मेरी बात को मतलब वैसे मत ले लो कि मैंने बोला तो वो सही ही होगा. आप खुद सर्च करो, आप अपने ऊपर खुद चीजों को एक्सप्लोर करो अपने लेवल पर, कि जो मैंने बोला है वो कितना जस्टिफाइड है. हो सकता है कि मेरा विजन आपके विजन से अलग हो, मेरा लाइफ का गोल अलग हो सकता है, आपकी लाइफ का गोल अलग हो सकता है. बट देन अगेन इट्स यू नीड टू डिसाइड. एंड आपको ही इसके ट्रेनिंग पीरियड में खुद ही अपने आप को फॉलो करना है. डेडिकेशन एंड अगेन आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस विल टेक यू प्लेसेस. दैट इज द बिग जिस्ट. ठीक है. और कुछ? If anyone want to ask anything, we are still open for question answer. And I think you made a very interesting point कि वो टाइम हम किस लिए बचा रहे हैं. अपनी प्रोग्रेस को उतना हम हैम्पर कर रहे हैं जितना हम सोच रहे हैं कि whether we should try it or we should not try it. But anyone has any further queries? So I Should I think, share my email address to them? Vivek ji, unmute yourself. sure, sir. Vivek ji, you are muted. Oh, Please sorry. unmute yourself. So should I share my email address with people so that they can directly ask me if they want to? If you say, if you allow, I don't know. I can, if I can. Okay. You can share your email ID. Okay. This is So, ma'am, I think we should be very happy if sir could do a small workshop with our student, Yes, because I was thinking that you have mentioned Camtasia. Camtasia. For any person who is trying to go for YouTube influencer, Camtasia This is the first best step. to start with. This is the first step, and second step will be the workshop, upcoming workshop with Vivek Nair ji. Thank you, ma'am. Thank you very much for the opportunity. Of And course, students, be it's really an prepared honor to to be learn with many Amity things. University. Students, be prepared to learn many things. And like you said, time is money. Then stop wasting your time and start working. Now is the moment, right? Okay. So it is for Okay. everyone, for each one of us. Thank you. Thank you, everybody. Thanks a lot. I should leave the meeting now.
I would just request Thank Chodi you. ma'am to extend a note of thanks, and Okay. I think we have already discussed the workshop, ma'am. Everything, yeah, we have So, discussed. So thank you, Vivek ji, for taking this session. Thank you, ma'am. And we Thank are you looking very much. forward to the workshop, upcoming workshop. Sure, And ma'am. thank you, Sure. Aditya, for coordinating this webinar. Thank you, IT team, for all your support. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Can I close the session? Yes, yes, please. yes, please. Sir, पता नहीं कैसा है मुझे